Hello everyone, welcome back to my channel. This is Arishkar. If you want to know how do I achieve this Indian wedding guest makeup look, then please keep on watching. So here is my clean face full of flaws and let's make it flawless. सबसे पहले I'll be using this sugar का illuminating moisturizer. It has highlighter, so इससे आपके फेस को मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ हल्की सी शाइन भी मिलेगी. And after moisturization, I'm using primer called Base of Glory. ये भी शुगर का प्राइमर है to fill up my pores. And for correction, मैं यूज़ कर रही हूँ LA Girl Pro Concealer in the shade orange, जहाँ पे भी मुझे पिगमेंटेशन है. एंड आफ्टर ब्लेंडिंग फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपनी हुडा ब्यूटी की फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन. इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन, सो ये थोड़ी सी थिक है, आपको अच्छे से ब्लेंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका बेस केकी हो सकता है. एंड ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. And for contouring, I'm using this Makeup Studio का base which is called Face It, and उसको मैं अपनी face shape के हिसाब से with concealer brush apply कर रही हूँ. And do follow me on my Instagram handles because वहाँ पे मैं अलग से अपने eye makeups वगैरह की videos डालती रहती हूँ. And for highlighting, I'm using my Maybelline का Age Rewind Concealer on my highlighting areas, under my eyes, bridge of the nose, cupid bow, my chin and forehead, and blend it well. And आपका highlighting shade आपकी skin shade से 1 or 2 tone lighter होना चाहिए, keep in mind. And here I am setting my contour with NYX का पाउडर हाईलाइट एंड कॉन्टूर पैलेट. उसके साथ मैं उसको सेट कर रही हूँ. एंड येस आई नो माई नोज लुक्स वियर्ड बट मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. एंड फॉर माई बेकिंग आई एम यूजिंग लॉरा मर्सियर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, जिसको मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ यूज़ कर रही हूँ टू सेट माई बेस अंडर माई आईज, forehead and nose. For eyebrows, I'm using this Anastasia ka Dip Brow to fill in them with angular brush. For my eyes, I'm using my Huda Beauty Rose Gold palette. I'm taking this light brown shade as transition shade for my crease area. I'm building the color according to my need. And for outer corner, I'm taking this dark brown shade with the same brush. और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये इसको मैं हल्का हल्का डार्क करती जाऊंगी. And blend it with fluffy blending brush. And here I'm using the lighter shade for my brow bone and inner corner. And again I'm taking this teal blue color from Morphe Jaclyn Hill palette on my eyeball area and taking the purple color from same palette और उसको मैं इनके बीच में apply कर रही हूँ. For liner I'm using this Kryolan का gel liner. उसको मैं simply line करके and corners को blend कर दूँगी with fluffy blending brush because I don't want wing liner. And same color black and purple for my lash line, lower lash line. And for my face I'm using this NARS ka 3-in-1 palette. Beautiful sa peach blush. This is my favorite blush called NARS Orgasm, and the highlighter is very pigmented and blinding as you can see. इसको मैं यूजुअल एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ to give it a glowy shimmery look. And here I'm using the heavy metal liner from Urban Decay into my inner corners and mascara on my lower lash line.
For lips, I'm using this lip liner, nude lip liner from PAC Cosmetics. And for lipstick, I'm using this Recode Key Beautiful Sea Pink Mauve color. I don't remember the shade, वो मैं आपको description box में डाल दूँगी. Do check it out. And to set my base, I'm using this Grand Finale Makeup Mist, Dewy Makeup Mist from Sugar Cosmetics. And here is my final look. I hope you all like it. If you do, then please don't forget to like, share and comment your views on it, because it keeps me motivated. And I'll be back with another video super soon. Till then, bye bye.